Hi there, my name is Prabhat Kumar and welcome to the Fast and Fluent English. Fast and Fluent English में आपका एक बार फिर से स्वागत है. Today we are going to play a grammar quiz game. हम लोग एक ग्रामर क्विज गेम आज खेलने जा रहे हैं. I will ask you 10 questions. मैं 10 क्वेश्चन पूछूंगा. Those are fill in the blanks. Fill in the blanks है. I will give you the options. मैं आपको ऑप्शंस दूंगा और आपको उसका आंसर करना है. अगर आपने करेक्ट आंसर किया तो आप 1 मार्क्स पाएंगे आउट ऑफ 10. आपको देखना आप कितने मार्क्स लाते हैं और मैं उसका रीजन भी बताऊंगा कि उसका आंसर क्या होगा. राइट, सो लेट्स स्टार्ट द गेम. फर्स्ट क्वेश्चन इज जॉन सॉ लास्ट वीक. जॉन सॉ डैश लास्ट वीक. हु और whom? क्या आंसर होगा? Who or whom? The correct answer is whom. Whom is the correct answer. क्यों? अगर इस डैश में ही या शी फिट करता है तो हम who का यूज करेंगे और अगर his और her फिट करता है तो हम whom का यूज करेंगे. Now the next one is, our politicians want to dash change. Our politicians want to dash change. Affect or effect. क्या होगा? Affect or effect. And the correct answer is effect. Because effect change is a phrase. Effect change एक phrase है. Now third one is, did you see the books dash I bought her? Did you see the books dash I bought her? That या फिर which. fill in the blanks में क्या होगा? That या फिर which. The correct answer is that. That correct answer है. अगर कोई फाइंडिंग वर्ब है तो उसके साथ हम that का यूज करते हैं. So did you see the books that I bought her? Now the next one is, neither of us dash intelligent enough. Neither of us dash intelligent enough. And the options are is, are. Is होगा या फिर are होगा. Please fill in the blanks. Is होगा या फिर are होगा. And the correct answer is. क्यों? क्योंकि neither को के साथ हमेशा हम सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं. neither के साथ हमेशा हम सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं. That's why neither of us is intelligent enough. Now the fifth one is, dash bag is that. Dash bag is that. And the options are whose or whose. Options are whose or whose. क्या होगा? The correct answer is whose. क्योंकि whose is contracted form of who is. It is a question word and who is the contracted form of whose is the contracted form of who is. The next one is, I wish I dash studied harder. I wish I dash studied harder. had
या फिर would have, कौन सा करेक्ट होगा, had या फिर would had? And the correct answer is had. कभी भी हम I wish के साथ अगर हम उन बातों की बात कर रहे होते हैं, उन पास्ट की बातों को जिसको हमने पूरा नहीं किया, तो हम had यूज करते हैं. Now the next one is I think I need to dash down and rest. I think I need to dash down and rest. Lay or lie. Lay or lie. क्या होगा? And the correct answer is lie. I think I need to lie down and rest. Lie down मतलब होता है a short rest, कुछ देर के लिए रेस्ट करना, और lay down मतलब होता है to establish any rule or something like that, या फिर surrender करना. Now the next one is you can stand between will and dash. You can stand between will and dash. And the options are I or me. क्या होगा करेक्ट आंसर? I होगा या फिर me होगा? And the correct answer is me. करेक्ट आंसर क्या है? me. कभी भी प्रीपोजिशन बिटवीन के साथ हम possessive pronoun यूज करते हैं. So me is the possessive pronoun. So you can stand between will and me. The next one is I want dash people in my kitchen. I want dash people in my kitchen. And the options are fewer or lesser. Fewer or lesser. The correct answer is fewer. Correct answer fewer, because people are countable noun. People countable noun है, and so we'll use fewer. The next one is two dash were you talking. Two dash were you talking. And the options are who, whom. क्या होगा करेक्ट आंसर? Who or whom? And the correct answer is whom. अगर कोई क्वेश्चन टू से स्टार्ट होता है तो हम whom का यूज करते हैं. So those were 10 questions. 10 क्वेश्चन थे. अब आप अपने आप को खुद एसेस करें कि आपको कितना मार्क्स आया है, और अगर आपने 100% कंप्लीट किया करेक्टली तो आप पास हैं. बाकी यू डू हैव टू ट्राई सम मोर. नाउ दिस वाज ऑल फॉर टुडे. आज के लिए बस इतना ही. अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक जरूर करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें. मैं इसी तरह और भी वीडियोस लेकर आता रहूंगा. तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.